very close to the national capital, in Greater Noida, a 20-year-old woman who was burnt alive, set ablaze by her husband and her mother-in-law, her in-laws, because they wanted more dowry. A few years back, she had given the family, that is her husband's family, an SUV, but they wanted more. They said they wanted 36 lakh rupees more. And the pictures that are playing out in front of us are shocking. I have all those pictures back to back. I will play out each of those videos one by one. Picture of the torture. This is the burning. Look at this. This is the picture of the torture. In fact, this is the video where the husband is seen attacking. I'm playing the audio. There is an audio layer on this as well. I want to play this out for the next few seconds. Let's play it out. In this video, ladies and gentlemen, you can see the husband. You see the killer husband there, not wearing a shirt. His mother, that is Nikki's mother-in-law, thrashing Nikki there, hitting her, pulling her by the hair. They have her pinned down and they're assaulting her. A free-for-all in that household. And that husband later on went on to say, yeah, this was usual. We used to fight every single day. I used to hit her every single day. Look at that video. This was moments before she breathed her last. In this video, in fact, the person shooting this video is Nikki's sister, who, by the way, is married to this killer husband's brother. So they were part of the family. And she's shooting the video, and she too was assaulted by Nikki's killer husband. Let me show you the next video. And this is the second video. There is no audio layer over this video, but let me describe the video. This is a video of Nikki set ablaze by her husband, walking down the stairs. She was burnt alive. She's walking down the stairs. She's seen burning as she tries to perhaps escape, but she had no escape route. By now, Nikki's skin is seen peeling off as she burns. Her body completely in flames, her upper body completely in flames. As she struggles, her skin near the hand seen peeling, her skin on her feet seen peeling, and the clothes that she's wearing seen completely burnt in the second video. Now let me show you the third video, ladies and gentlemen. The aftermath immediately after this video. This is the third video. The last few moments where Nikki is seen struggling for life. She's seen sitting on the floor, struggling for life, moments after she was set ablaze. Now what is clear in this video is that her clothes were burnt, an immediate aftermath of her being set ablaze by her husband. The video shows Nikki struggling. She's at this point unconscious almost. She's struggling to simply sit straight. And the person shooting the video tries to put a cloth over her after she was burnt alive. You can see that her skin is burnt. We've blurred the video. It's a disturbing video. This is moments after she was burnt. Now let me show you the fourth video. The fourth video is the aftermath of what happened. She died. She breathed her last. And this is the killer husband. Killer husband shot by the police. The UP police shot him in an encounter. And he seems completely cool. Look at him. Almost like he's going to hospital for a checkup. He's been shot. And then the police there heard in this video asking for the cops, asking for the doctor. They ask for the doctor. The police bring him to the hospital, put him on a bed, and they ask for the doctor. They're perhaps talking to their seniors. In this video, the police is a raw footage of the police asking for the doctors to arrive. The cops are seen rushing Nikki's husband, Vipin, to the hospital. There is an audio layer over this. I'd like to play the audio layer, please. There is an audio over this. I'll play the audio as well immediately after this, because the police is clearly heard in the video
to get the doctor. In fact, I'll play that video out in just a few seconds. Let me tell you, there was an encounter. There were still pictures as well of the encounter. If we have the still pictures, I'll play the still pictures and also play out what happened inside the hospital immediately, moments after he was shot and taken there by the police. If I have the audio, we can play the audio. This was, yes, there it is. कुछ कहना तुम्हें? नहीं. कुछ भी कहना? Okay, now let me show you the final video, the second last video. In fact, in the same hospital, this next video, please, let's go to the next part, where you see, in the next part of the video, if you can please play that video, no remorse. He's lying on the hospital bed. The police, in fact, someone is heard asking him a question, whether he has any regrets. He says, I have no regrets, no remorse, I didn't do anything. In the video, he's seen assaulting, torturing, and setting her ablaze. Look at him. I'd like to play the audio now out. गलती पछतावा है, कुछ गलती का पछतावा है। भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुला लेने दो, एक सेकंड। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार, कौन है? ड्यूटी पर कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। है? गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुला लेने दो, एक सेकंड। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार, कौन है? ड्यूटी पर कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। है? गलती In the next video, ladies and gentlemen, as an aftermath of all of this, imagine the impact on the children. This is the last video where the son of Nikki, says that he saw his own father set his mother ablaze with a lighter. He says, my father set ablaze my mother using a lighter. है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। What a sad story, ladies and gentlemen. What we will do now is we will keep playing the pictures. The 6 videos that we just played out, we're going to play out those videos one after the other. And while we do that, I'm also going to, on one part of the screen, go across to my colleague, Akhil. He's at the spot. He's been talking to both families, talking to the police, gathering more information, investigating the story. Akhil, what are the facts of the case? Why did they torture her? Yes, we know that there is a dowry angle. For how many years was she being tortured? Well, Niranjan, if you see, the marriage took place long back on December 9, 2016. For the 9 years, she was in this marriage. And now what we are seeing that after this incident took place yesterday itself, what we have seen that last evening, the Gautam Buddha Nagar police team arrested 2 persons, which include the main accused, who is Vipin, identified as Vipin Bhati. He was arrested by the Gautam Buddha Nagar police team. And apart from that, if you see, her mother-in-law was also arrested. Today, this morning, what we have seen that 2 more arrests have been made so far. So all the 4 main accused have been arrested in connection with the case. Right now, I'm joined by the victim's father over here. अच्छा, मुझे ये बताइए
बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, ये डाउरी का जो मसला है, जहेज का जो मसला है, आपकी बेटी के साथ लगातार मांगा जा रहा था, आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, शिकायत क्यों नहीं की इतने वक्त से अगर पैसा मांगा जा रहा था तो? ये हमारी बिरादर में बैठ के समझौता हो जा, पुलिस कचहरी में तो जब जाता है जब आदमी को मान सम्मान ना होता पंचायत का बिरादर का। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी बेटी को रील्स बनाने से, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से रोका जा रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर एक बात बताओ, जब आदमी इंस्टाग्राम काम कर रहे हो, आप भी तो इंस्टाग्राम पर चल रहे हो, तो क्या रोका जाता था? अनपढ़ गवार है वो, इंस्टाग्राम फोन सब चला रहे हैं, आजकल बच्चा भी चला रहा है। इंस्टाग्राम गलत मिसयूज थोड़ी चल रहा है, वो तो दुकान के लिए इंस्टाग्राम चल रहा है, वो तो इंस्टाग्राम का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब पार्लर तो पहले से ही चल रहा था, इंस्टाग्राम से ही चल रहा। कोई जब वो पार्लर चला रही थी तो क्या उसका हस्बैंड जो है इस बात पे बाधा डालता था कि तुम पार्लर मत चलाओ, इस तरह के काम क्यों कर रही हो, इस तरह का कुछ बाधा था, रोक था पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो घर में कमाई का जो साधन था वो क्या था? ऐसा बता रहे हैं कि दोनों बेरोजगार थे, दोनों जो बड़ा बेटा है बेरोजगार थे। बेटी पार्लर चला के अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अपना खर्चा चला रही थी, बच्चों को ट्यूशन चला रही थी। आपने पार्लर एस्टैब्लिश करने में कितना पैसा दिया था? 1.5 लाख रुपया दिया मैंने। टोटल जो जहेज का था, शादी के बाद भी आपने टोटल कितने पैसे दिए अब तक? शादी के बाद मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी दहेज में, उसमें दहेज में और कौन सी गाड़ियाँ दी? स्कॉर्पियो दी शादी में। 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। और कैश कितना दिया आपने? कैश? हाँ, कैश भी दिया आपने? कैश दिया हमने। कितना दिया कैश? गुप्त में दिया, गुप्त दान देते हैं जैसे, एक बैग में भर के गुप्त दान। अच्छा, ये बताइए कि इस मामले में जो है अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या आश्वस्त हैं आप? जो अभी स्वस्थ हैं प्रशासन से, प्रशासन आगे क्या मांगे हैं आपकी? आगे हमारी ये मांग है, ऐसे दरिंदे को, भूमाफिया को जब मकान ठहराता है, ऐसे दरिंदों का भी मकान बिल्डोजर बाबा चलना चाहिए। So here you see Niranjan, he's the father of the victim. Right now I'm going to allow to speak to him. So he's going to speak to you. I'm just putting headphones on his ear. आपसे सवाल कर रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? नहीं। You can directly ask question to him, Niranjan. You can ask directly question to him, Niranjan. Yes. मेरी आवाज आ रही है सर आपको? नमस्ते जी। जी आ रही है। कितने सालों से ये जो मार पिटाई चल रही थी? नमस्ते जी। बहुत दुख है हमें, ये सभी जो तस्वीरें हैं उसको देख के बहुत दुख लग रहा है हम सबको। ये कितने सालों से मार पीटता था ये दरिंदा? ये दरिंदा 1 साल से इन बच्ची को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। सर जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि हमें बताया जा रहा है कि ये सालों से चल रहा था, और आपने क्यों एक बार भी आप पुलिस से कंप्लेन क्यों नहीं किया आपने? हमारे समाज में पहले समाज बिरादर बैठती है, प्रशासन को जब किया जाता है सर। अच्छा, और समाज में आप किसी को बताया था कि ऐसा हो रहा है मेरी बेटी के साथ? समाज बिरादर की नहीं मान। हाँ, समाज को सबको पता थे जब वो बेटी लेना आए, जब मैंने सारी बात बताई उन्हें। अच्छा, सबके सामने रखी मैंने ये बात। किन किन लोगों के सामने रखी थी आपने बात? ये जो उनके साथ सामाजिक लोग आए थे, हमारे यहाँ के जो थे वो है ही लो, उनके नाम तो जानता हूँ मैं अपने गांव के, इनके उनके नाम क्या जानूँ, कौन कौन बंदे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो उनके समाज के जो नेता है वो आए थे आपके पास? उनके समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी आपने? उनको बताया था कि ये सब चल रहा है मेरी बेटी के साथ? बताया मैंने। वो इंस्टाग्राम की भी वहाँ बात आई थी। इंस्टाग्राम उसने धर्मेंद्र प्रधान मौजूद आदमी ने कहा कि इंस्टाग्राम जो बच्चा काम कर रहा है इंस्टाग्राम तो चलाएगा, तुम तो कोई काम भी नहीं कर रहे, दारू पीते डोले, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम्हारी 20 मिस्टेक पकड़ी जा रही हैं, इनकी कोई ऐसी मिस्टेक तो पकड़ो बच्ची इनकी जो तुम इंस्टाग्राम पर जोर दे रहे हो। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि आपकी जो बेटी थी निक्की काम भी करती थी और परिवार का जो भी खर्चा था निक्की उठाती थी। उनका प्रॉब्लम ये था कि निक्की सब काम करती थी। उनका प्रॉब्लम ये था, और वो घर में बैठा रहता था। वो घर में बैठा रहता, दारू पीता, घूमता था और क्या करता था।
कोई नौकरी थोड़ी थी उसकी। और ये कितने दिन से चल रही थी ये सभी मार पिटाई? आपको निक्की ने कब बोला था इसके बारे में पहली बात? हमें तो 2024 में इसको पता लगा, फिर हम गए वहाँ, समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, इस घर को चलाओ, आपस में झगड़ा नहीं करते, ये रो। क्या ये रोज की बात थी सर जी? ये रोज होता था ये मारपीट जो वीडियो में है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे? देखो रोज नहीं होता था, 8-10 दिनों में ये हो जाता था। फिर जब हद पार होगी हम फरवरी में बिटिया को ले आए। फिर पंचायत आई, हमने अप्रैल में भेज दिया, इसी अप्रैल में 2025 में। ओके। और उनको जो इंस्टाग्राम का जो भी ये जो बताया जा रहा है अभी, जो इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, आपका कहना क्या ये है कि ये इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उनको एक अलग स्टोरी अभी रखना चाहते हैं इसके बारे, निक्की के बारे में? ये गलत बातें जो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम एंगल जो दे रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि उसको कुछ और बोलना चाह रहे हैं वो आपके बेटी के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। ओके Akhil, so he's saying now, from what I understood, he's saying as Akhil comes live, right? Akhil, he's saying that yes, she used to be active on social media, but there are some people who are now giving this angle that she was active on social media and using that to attack her and question her character, if I heard him rightly. Is that correct? That's right, Niranjan. If you see, this is what the claim are being made in that regard. Earlier, what we have seen that she has got a large follower base on Instagram as well. She has got more than 58,000 followers on Instagram, and due to which her husband, Nikki's husband, has been constantly requesting her to stop posting videos on Instagram and not make reels. And she has been very resistant about it, and she has been continuously posting videos on Instagram, and due to which what we have been seeing that this incident has basically got into a next level, and after that the unfortunate incident took place on Thursday evening when the person who is in question right now, Bipin Bhati, has attacked Nikki on that day. Yeah. Okay. Fine. Thank you. What we'll do at this point is I want to play those videos out once again, Akhil. In case you're watching this video, the entire story summarized in 6 videos. There is a lady called Nikki, a fairly successful woman by her own right, used to work and keep the family running in Greater Noida in the National Capital Region. There are 6 videos. The video is now of her husband, who used to torture her, assault her, along with her in-laws, along with his mother and her mother-in-law. They would torture her and then they set her ablaze. The second video is of her being set ablaze. The third video, her last few moments when she's seen sitting on the floor struggling for life. And let me show you the next video. After Nikki was killed, there's an encounter. The police go after her husband. There's an encounter. He was taken to the hospital. A dramatic video that emerged yesterday. Those are the pictures of him being shot in an encounter brought by the police in Uttar Pradesh, Yogi Adityanath's police. And let me show you the next video. In the next video, he's seen sitting on a hospital bed, lying down on a hospital bed. And then he says, I have no regrets. We used to fight often. There's nothing. He says, there's nothing unusual because we used to fight all the time. He says he has no regrets, no remorse. Absolutely no remorse, completely calm. Right? And let me show you the last video. The son of Nikki and Vipin, that's the son. And that's the sister wearing a yellow dress. And she asks him to tell the media what he saw firsthand, and he says, my father set my mother ablaze using a lighter. Because Nikki was